हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत अग्रवाल और आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के सभी चैप्टर्स लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। तो जिसमें हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम ISC 2020 पेपर। तो इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि अ पॉइंट चार्ज Q इज kept at each of the vertices of equilateral triangle having each side A. Equilateral triangle is given, all side will equal, that is A. Point charges plus Q is placed at each of three vertex. Now you have to calculate total electrostatic potential energy. क्योंकि हमें सिस्टम की एनर्जी निकालनी है, तो इसलिए पहले हमें तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, देयर शुड नो कंफ्यूजन बिटवीन दिस फॉर्मूला एंड कूलम्बियन फोर्स। कूलम्बियन फोर्स के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर आता है, जबकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में सिर्फ ए आता है। दूसरी चीज, इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम यहाँ चार्ज का साइन पुट कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम लोग एक सेट लेंगे लाइक बिटवीन ए एंड बी, हम इसके पोटेंशियल निकालेंगे। सिमिलरली ए सी एंड बी सी दे विल बी सिमिलर ड्यू टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डिस्टेंस। इसलिए हम लोग एक पोटेंशियल निकालेंगे और उसका ट्रिपल भी कर देंगे तो पूरे सिस्टम की एनर्जी निकल आएगी। अदरवाइज हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। फर्स्ट यू विल कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी अक्रॉस ए एंड बी। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, two charges have same magnitude q multiplied by q divided by distance between them. Arrange it. 1/4 pi epsilon 0 q square upon a. Similarly, u of b and c and u of ca will be similar in magnitude. So all three will similar. It is known that all the charges are positive, so they will simply add up because you have to calculate total potential energy. So what is total potential energy? This is U equals potential energy across A and B plus potential energy across BC plus potential energy across CA. If you add all three which are similar, then you will get the answer 3 times 1/4 pi epsilon 0 q square upon a, and put the unit of energy. If it is given in SI system, then you will put joule. So this will be the answer of this very first question. Now come to second question. It is taken from ISC 2019 paper. फर्स्ट थिंग यू शुड रिमेम्बर दैट कि कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो पहले ये चेक करें कि वो किस यूनिट या चैप्टर से रिलेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे कि वो किस टॉपिक को बिलोंग करता है, तो हम फॉर्मूला लगाना इजी रहेगा। सो व्हाट इज दिस क्वेश्चन? अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम encloses charges -q and +3q. The total electric flux emerging out of the surface is. This is MCQ type question. So 4 options are given: 0, 2q upon epsilon 0, 3q upon epsilon 0 और 4q upon epsilon 0. तो ऑब्वियस है कि दिस फ्लक्स टर्म रिलेटेड टू गॉस थ्योरम। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सॉल्विंग कैसे करेंगे। क्लोज सरफेस, पहले तो क्लोज सरफेस ड्रॉ कर लें।
Draw a closed surface. In that surface, two charges are given. First minus q and other one of plus 3q. Gauss theorem is always related to closed surface. Okay, there should be closed surface. Charges should be enclosed. अगर कोई चार्ज बाहर है, सपोज को यहाँ पर कोई चार्ज होता, तो it will not affect any electric force. It will not show its electric flux. Okay? तो सिर्फ हम जो फ्लक्स निकालते हैं वो इनक्लोज चार्ज का निकालते हैं और इसको हम उस केस में इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वैसे जैसे इस समय हम करने आ रहे हैं. क्वेश्चन में गिवन माइनस क्यू एंड 3q बोथ आर इनक्लोज्ड. सो बाहर का चार्ज हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ अंदर का फ्लक्स निकालेंगे. बाय गॉस लॉ. डू यू नो गॉस लॉ? गॉस लॉ का स्टेटमेंट और इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं. डेरिवेशन की वीडियो भी आपको जल्दी सेंड कर दी जाएगी. As per Gauss law, electric flux through an enclosed surface is equals to 1 upon epsilon 0 times of charge enclosed by that surface. Here Q is the charge enclosed. So here we have to calculate only enclosed charge. So what is the enclosed charge here? As you can see, I have taken two charges, minus Q and 3Q according to question. So what is the total enclosed charge? Minus Q plus CQ. Upon epsilon 0 is constant, so it will no matter. The overall calculation is 2Q upon epsilon 0. This will be the final answer. 2Q upon epsilon 0, it will be the right answer, any option number B. Now come to question number 3. This is another question of physics board exam. This question is related to chapter capacitance. Three capacitors or capacitances: C1 3 microfarad, C2 6 microfarad, and C3 is 10 microfarad. You can see the arrangement in this figure. You have to calculate equivalent capacitance and electrostatic potential energy of the system. तो अगर equivalent capacitance निकालना है तो first you should see this diagram. What is the arrangement of capacitors? You can do it by your own by keeping pause to this video. Otherwise, I am solving here. So here you can see 3 microfarad and 6 microfarad capacitors are in series combination. The equivalent capacitance of this series combination is, I am taking its equivalence as C dash. So if you have to calculate C dash, as you know, if this is series combination, what is the formula for equivalent capacitance? 1 upon C dash equals 1 upon C1 plus 1 upon C2 equals 1 upon first capacitance is 3 microfarad. Another one is of 6 microfarad. On solving, you will get 3 by 6 means 1 upon 2. So this is 1 upon C dash. So what is the final equivalent capacitance of series combination? Capacitance, equivalent capacitance series combination is 2 microfarad. So it means the equivalent capacitance of this 3 and 6 is C dash. Now this C dash and C3 are in parallel combination. What is the equivalent capacitance of this parallel combination? I will take it as C double dash equals, in parallel combination we will add directly C dash plus C3. Here C dash is 2 microfarad and C3 is 10 microfarad. Take microfarad common and you will get 12 microfarad capacitance.
Understood? This is the answer for first part. Now, come to second part. You have to calculate electrostatic potential stored in system. As you know, the formula of potential energy is U equals half CV square. कैपेसिटेंस केस में जो फॉर्मूले कुछ और भी होते हैं, हाफ CV square, another formula is half QV, next is half Q square upon C. जो पिछला फॉर्मूला आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का, वो चार्ज बेसिस था। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस हो तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर कैपेसिटर दिया तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग को नोन क्या है, C डबल डैश, दैट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज नोन एंड पोटेंशियल V इज नोन 10V. तो I will use the very first formula, the first relation, this half, in place of C you will put the equivalent capacitance C double dash and then V square. C double dash is 12, and what is equivalent, sorry, total voltage, that is 10 square. Cancel 12 by 2, 6. Answer is 600. This is the electrostatic potential energy, electrostatic potential of this system. This is the final answer. तो बहुत इजी हो जाएगा अगर हम ये समझ लें कि किस चैप्टर से उसका कौन सा रिलेशन आपको अप्लाई करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Next question is taken from NCERT exemplar. What is given in this question? Here you can see a pentagon. Okay, here you can see a pentagon. At each of this vertex, charge Q is placed again. Here charge Q is given. Then you will have to calculate the electric field at O if charge from O, or if charge from one of the corners, say A, is removed. अब यहाँ 5 चार्जेस दिखे हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हमें बताना है कि अगर हम यहाँ से एक चार्ज को हटा दें तो अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी काम करेगी। ये नोन है कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, देन सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to all the charges at O should be 0. Okay, vector sum of electric field due to charge at A and electric field due to other 4 charges should be 0. What does it mean? It means that electric field at O due to A and electric field due to all other 4 charges, all other 4 charges should be 0. Vector sum of these 2 electric field should be 0. इसका मतलब ये अगर हम ए निकाल देते हैं तो हम 4 चार्जेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 चार्जेस will be shift EA on other side, so it will come with negative sign. Negative sign represent that a resultant of these two, means electric field due to 4 charges and due to E, A should be equal and opposite, तभी तो नेट 0 होगा। तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, then you can remove this negative sign. तो what is the electric field due to 4 other charges? तो simply इस EA का मैग्नीट्यूड इस 4 चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4πε0 Q/r², and it is given that the distance from vertex to center O is r. तो अगर हम यहाँ इस A से O की साइड एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये डिस्टेंस भी r ही होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू A is 1/4πε0 Q/r². Here r is small r², Newton per Coulomb. This will be the answer of first question. ठीक है, what will be electric field at O if charge from one of the corner remove? तो one of the charge हमने लिया था A पर, तो उस A के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी, और यही सम होगा बाकी 4 चार्जेस तो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो this is first question. You can say first part of this question.
Now, what is given second part? What will be electric field at O if charge Q at A is replaced by minus Q? अभी तक तो प्लस Q चार्ज रखा हुआ था, अब यहाँ पर चार्ज चेंज करके रख दिया गया माइनस Q. तो if charge at Q, if charge Q at A is replaced by minus Q, then electric field due to this negative charge is, क्या हो जाएगा? E due to minus Q, it will be 1/4 by epsilon 0 Q upon R square. ओके, तो ये होगा. और डायरेक्शन along O to A. और 4 अदर चार्जेस को तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, 4 अदर चार्जेस को तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाउ मच? Total electric field at O will be electric field due to negative charge. फिफ्थ चार्ज तो चेंज कर दिया हमने, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 अदर चार्जेस. सो व्हाट विल बी रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? तो अगर हम लोग ये देखते हैं, माइनस क्यू वाला हमने फाइंड कर लिया था ना, 1/4 पर एप्सिलॉन 0. मैग्नीट्यूड तो सेम था, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज था बस, क्यू अपन आर स्क्वायर. क्योंकि 4 अदर चार्जेस के थ्रू भी सेम रिजल्ट है, एग्जैक्टली सेम ये वाला, तो इसलिए हम सीधे इसको मल्टीप्लाई 2 कर देंगे और ये मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर. व्हाट विल बी फाइनल आंसर ऑफ दीज 5 चार्जेस, सेट ऑफ 5 चार्जेस? 1/4 पर एप्सिलॉन 0 to Q upon R square, and direction will be along OA. Now come to next question, number 5. Next question is that in which 2 charge plates are given and a point charge plus Q is kept in vicinity of uncharged conducting. Sorry, here are 2 parts. Okay, here are 2 parts of this question, and this diagram is related to part B. The first I will do its first part. Point charge plus Q is placed in vicinity of an uncharged conducting plate. So in very first part, I am drawing an uncharged conducting plate. Suppose this is uncharged conducting plate, and point charge plus Q is here. This is charge plus Q. So you have to draw the lines of force between the charge and the plate. So you can show here. ये known है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, then due to induction, the nearby surface will attain charge opposite to it. That is point charge. Because point charge positive charge, so charge develop the nearer surface of the plate will be negative, and other surface will be positive. Okay, so it means that the lines of force that will pass from point charge will go in this manner, like this, positive to negative side, like this. Draw few more. So these will be the lines of force. Okay, very important question is this. छोटा है लेकिन important question है. Next question B. Two infinitely large plane thin parallel sheets having charge density sigma 1 and sigma 2. Suppose
sigma 1 with the surface charge density of first plate and sigma 2 will with the surface charge density of second. You have to calculate magnitude and direction of field in region marked 2 and 3. हमको 2 and 3 पोर्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड आउट करनी है. तो कैन यू गेस कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? कैन यू गेस? तो ये क्वेश्चन हमारा है गॉस थ्योरम से. गॉस थ्योरम हमने पढ़ा था, ड्यू टू सिंगल प्लेन शीट ऑफ चार्ज नियर बाय पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसका एक्सप्रेशन होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0. यहाँ पे 2 प्लेट दी गई हैं तो हम लोगों को 2 प्लेट का इफेक्ट शो करना पड़ेगा. तो पहले हम निकालेंगे. यहाँ पर गिवन है सिग्मा 1 इज मोर देन सिग्मा 2. सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बिगर है. तो अगर हम कोई पॉइंट 2 पोजीशन पे लेते हैं, क्योंकि हम 2 और 3 पे निकालना है ना, तो सेकंड पॉइंट पे कोई पॉइंट अगर P ले लेते हैं तो ये प्लेट इसको इधर रिपेल करेगी और जो सेकंड प्लेट होगी वो P को ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेगी. मींस एक राइट एक लेफ्ट. तो अगर हम E निकालते हैं एट सेकंड पोजीशन, then both the electric field caused by 2 plates will be opposite to each other, but bigger one will be of E1 due to larger value of surface charge density. So subtract E1 and E2 vector. Formula I have mentioned you here, sigma upon 2 epsilon 0. So for first plate, 1 upon 2 epsilon 0 taken as common, result will be sigma 1 minus sigma 2. And what will direction of it? What direction of it? From plate A to plate B. In the same manner, you can calculate E at any point in the region 3. Suppose here is point Q. You can see if you take first plate, because point taken is always positive, then first plate will repel the point Q in right side, similarly 3 in right side. So what will net electric field? Now here you will add up to both of these intensities. E1 vector or E2 vector दोनों add up हो जाएंगे. Only change will be there, the sign will be positive rather than negative in first part. Again it will repel. Okay, so this is the final answer of this question. Very important question is this. इस क्वेश्चन को तो आप पॉज करके सोचना चाहिए, फिर इसका आंसर आप सर्च करिएगा. ओके, इसमें भी सेम इंडक्शन फिनोमेना लगेगा. A point positive charge is brought near an insulated conducting sphere. The electric field is best given by this MCQ question. You have to select which is best figure. So best electric field is given by. Here you can see कि पॉजिटिव चार्ज से सभी में दिया हुआ है. ये नोन है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम आउट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. ओके, but if we obey induction phenomena according to that, the nearer end, suppose अगर ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ कोई स्फीयर है, तो the nearer end will become negative charge due to induction. In induction phenomena, you will not touch charged body to uncharged body. Okay, you will keep it from some distance. और rather than इसको जो opposite surface होगी ये positively charge बन जाएगी. Clear? So it means lines of force will go from plus Q towards this surface and again from this surface to outside. So this should be the direction. पहले प्लस Q से इधर जाएगा और फिर इस बॉडी से बाहर निकलेगी. क्योंकि लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं और इस वे में ये होगा फिगर नंबर 2 करेक्ट. क्योंकि ये पॉजिटिव है तो अब इसे नेगेटिव होगा इनर सरफेस. तो नेगेटिव होने से ये सभी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इधर मूव करेंगी और फिर अगेन ये पॉजिटिव एंड होगा तो यहाँ से राइट साइड ये लाइन से हो जाएंगी. तो दिस आंसर विल बी करेक्ट. बी पार्ट, दिस बी विल बी करेक्ट इन ऑप्शन नंबर सी. This is again MCQ taken from NCERT example.
This figure show electric lines of force in which electric dipole P is placed as shown. तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई गई है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती तो ऑल द लाइन शुड बी पैरेलल, और उस केस में अगर कोई डायपोल अंदर रखा होता तो उसमें नेट फोर्स जीरो हो जाती। ठीक है, बट यहाँ शो कर रहा है कि लाइंस ऑफ फोर्स आर डाइवर्जिंग। इट मीन्स हियर इज सम पॉजिटिव चार्ज, हियर इज सम नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियस है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव क्यू यानी डायपोल के नेगेटिव क्यू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, बट विच विल बी बिगर। वो डिपेंड तो करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा कहाँ पर होगी, जहां पर चार्ज एक्युमुलेशन ज्यादा हो, मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। देख सकते हैं ना ये लाइन्स कहीं ना कहीं मीट कर रही होंगी, तो ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी लेफ्ट साइड ज्यादा होगी। और यही रीजन है कि माइनस क्यू यानी डायपोल के माइनस क्यू और जो लगने वाला फोर्स होगा वो प्लस क्यू से ज्यादा होगा ड्यू टू ग्रेटर डेंसिटी। ओके, जो लेफ्ट साइड चार्ज की डेंसिटी होगी वो ज्यादा है, इस वजह से माइनस क्यू को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। सपोज फोर्स F1 है तो F1 विल मोर देन F2। तो सो which option is correct? Dipole will experience a force towards left side, otherwise net force zero होती। तो option number C will be correct. Question number 8. How does electric flux due to point charge enclosed by spherical Gaussian surface get affected when its radius is increased? अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और जैसे आप लोग को पता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ, क्वेश्चन फिर से गॉस लॉ का ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय इनक्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। और यहाँ पर देखने में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का साइज हम हाफ करें, डबल करें, रेडियस इंक्रीज कर दें, देयर विल नो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So since electric flux is independent on size of Gaussian surface, so electric flux will remain same. यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा there will no change in the magnitude of electric flux. Now its second part. तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या दिया है, व्हाट इज फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E equal 3 into 10 raised to the power 3I. What I shows? I shows that electric field is along x-axis, और इसका मैग्नीट्यूड है 3 into 10 raised to the power 3 न्यूटन पर कूलम। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी along x-axis। और इसी के नॉर्मली हम लोग को एक प्लेन रखना है थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन हेल्ड नॉर्मल टू E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, और ये नॉर्मल प्लेन रखना है कि स्क्वायर शेप में। अगर हम ये नॉर्मल प्लेन रखेंगे, प्लेन नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, तो जो इसका आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। ये नोन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल्स ई ए cos theta, and here theta is the angle between electric field intensity and area vector. So because both are parallel, so theta is 0 degree, and cos 0 is 1. So electric flux phi is the product of magnitude of electric field intensity and area vector. So electric field intensity given is 3 multiplied by 10 raised to the power 3. And what is the area? Because side given is 10 centimeter. 10 centimeter means how many meter? Convert that into meter, dividing by 100.
So what you will get? Its area, its side is 0.1 meter. And what will be area of this surface? Side is square, means 0.1 whole square. On solving, you will get its result 30. And unit is Newton Coulomb inverse meter square. This is one of the important question for board point of view. Please practice it. Now come to next question. In this question, two hollow concentric spheres S1 and S2 are given, enclosing 2Q and 4Q charges. Okay. 2Q is inside surface S1 and inside between S1 and S2 there is 4Q. Find out ratio of electric flux through them. And in second part, you have to determine electric flux through S1 change if medium or dielectric constant epsilon r is introduced in space between S1 in place of air. So first of all, you will calculate electric flux passing through that S1, means phi 1 will be, as you know, the formula for electric flux is Q upon epsilon naught, but charge should be enclosed. So how much charge is enclosed in between this S1? S1 के अंदर है सिर्फ 2Q charge. So substitute 2Q here upon epsilon 0. To calculate ratio between flux of these two surfaces, first you will calculate phi 1 for S1 and phi 2 for S2. How much charge enclosed by S2? S2 में कितना charge enclosed है? 4Q ये वाला और 2Q ये. Total कितना हो गया? 4Q plus 2Q upon epsilon 0. 2Q is common, ठीक है? Q जो 2Q चार्ज है वो S1 भी इनक्लोज कर रहा है और S2 भी इनक्लोज कर रहा है. तो टोटल चार्ज हम लेंगे यहाँ पर S2 के लिए 4Q plus 2Q, और जब केवल S1 लेना हो तो 2Q लेंगे. जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग बताया भी था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर आउटसाइड चार्ज है तो इसका फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चार्ज इंक्लोज होना चाहिए. तो टोटल फ्लक्स इज 6Q upon epsilon 0. Now you have to calculate the ratio of these two flux. Phi 1 upon phi 2 is, phi 1 is 2Q upon epsilon 0, while phi 2 is 6Q upon epsilon 0. Ratio will be 1:3. This is the answer for first part. Now come to second. Second part में कुछ खास चीज नहीं दी गई, उसमें ये कहा गया है कि if you are filling this part, how will electric flux to S1 change if medium of dielectric constant is introduced between in the space inside S1 in place of air? Sorry, inside S2 होगा, inside S2 होगा. मतलब हमें इस पार्ट में हमें डायरेक्टिक मीडियम फिल करना है. तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज होगा इनसाइड S1? इज देयर एनी चेंज फ्लक्स थ्रू S1? नो, क्योंकि फिलिंग तो बाहर कर रहे हैं ना, और बाहर जो 4Q चार्ज है दैट इज नॉट इनक्लोज्ड बाय S1, सो देयर विल नो चेंज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1, मींस देयर इज नो इफेक्ट, देयर नो चेंज will takes place for electric flux enclosed by S1. So the final answer will be no effect. In this question, only law is given and you have to determine which law is this. Force is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. इन्होंने चार्ज से रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो कूलम्स लॉ का होता है. तो हियर कूलम्स लॉ इज दिस. तो हम सभी लॉ के बाद देख लेते हैं, इससे कंफ्यूजन ना और रिमाइंड भी जाएगा. जो न्यूटन लॉ था वो बेसिकली न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन था, ये आपने 11th पढ़ा होगा. F इक्वल्स टू, उसमें फॉर्मूला होता था G m1 m2 अपना स्क्वायर. जब
प्रोडक्ट ऑफ मासेस लेते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर डिस्टेंस होता है। कोलंबियन फोर्स तो हम लोग का चल ही रहा है, दैट इज 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर 9 Q1 Q2 upon R square. The product of charges inversely proportional to square of distance. Gauss law corresponds to electric flux. Electric flux is 1 upon epsilon 0 times of charge enclosed by the surface. And last, Coulomb's law. Potential difference and current are related to each other. The pradhana at constant temperature, the current flowing through conductor is directly proportional to potential difference. And you can write it as V equals to Rn. So all these are the laws given in this question. But according to this statement, only Coulombian law will hold. Question number 11. A point charge Q is placed at point O. Here is point O given. यहाँ पर charge हमको लेना है Q. Is potential at A, that is VA. Potential at A calculate करना है हमको. Is greater, smaller or equal to potential at B. B पर potential निकालना है. So you have to tell whether VA is more than VB, VA less than VB और VA equal to VB. हमको इनमें तीन में डिस्टिंग्विश करना है कौन सा सही है. ठीक है. Condition is that given Q is positive and second condition Q negative. तो एक बार हमें एज्यूम करना पड़ेगा पॉजिटिव Q. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास प्लस Q चार्ज दिया हुआ है एट O. So what is the potential at A, for which you will have to need distance? Suppose distance between O and A assumed is RA, and that between O and B is taken as RB. What is the potential at A? Potential at A. The formula for electric potential is 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R only. R is the distance between 2 point charges. So in first case, what is given? In place of small q, the charge capital Q is given. Put capital Q here, and in place of R, put RA. Similarly, potential at B, rest will remain same, only distance will get changed. 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon RB. Okay. What is difference between these two potential difference? You have to calculate VA minus VB. डिफरेंस निकालेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि VA बिगर है कि VB बिगर है. दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन टर्म तो बाहर निकाल लेंगे. 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 Q is also taken as common. 1 upon RA minus 1 upon RB. So this potential difference VA minus VB depend upon two factors. First, sign of this and sign of charge. So in first case, I am taking Q as positive. तो अब फिर हम चेक करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला मटेरियल. ये नोन है कि RA, डिस्टेंस ऑफ A from O is lesser than RB. जब ये पार्ट लेसर है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा 1 upon RA, ये मोर होगा. ठीक है. 1 upon RA टर्म बिगर होगा. इट मीन्स 1 upon RA minus 1 upon RB term is always positive. कंडीशन इज दैट कि हम R जो है वो फिक्स्ड है. ठीक है. ये तो फिक्स रहेगा. अब हमें बदलना है Q. जैसे उन्होंने फर्स्ट केस में Q पॉजिटिव दिया है,
Q पॉजिटिव है, 1/R A माइनस 1/R B पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो VA माइनस VB टर्म ये भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने का मतलब होता है मोर देन 0। इट मीन्स VA इज मोर देन VB। तो फर्स्ट केस में VA बिगर होगा देन VB। एंड नेक्स्ट केस इज दैट कि Q अगर नेगेटिव हो, अगर Q नेगेटिव हो तो ये तो अभी पॉजिटिव रहेगा 1/R माइनस 1/R B। तो इसका मतलब VA माइनस VB नेगेटिव हो जाएगा। VA minus VB term will negative. Negative is less than 0. In that case, VA will smaller than VB. These two are the solution of this very part, this very question. Now come to next question, number 2. What is given in this question? This question also taken from a sample question paper from 1718. क्वेश्चन किसी बोर्ड का हो, सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी ने जहां तक हो सके प्रैक्टिस करें हर टाइप क्वेश्चन की। What is given this question? In this question, what is given? Charge plus Q is placed center of dotted circle. यहाँ चार्ज रखा हुआ है। Work done taking from charge plus Q from A to B is W1. A से B तक कह रहे हैं हम लोग का वर्क डन W1 करना पड़ा, जबकि B से C आने में वर्क W2 करना पड़ रहा है। Which one of following is correct? तो कौन सा सही है? क्या W1 more than W2 ठीक है, कि W1 equal to W2 ठीक है, या W1 less than W2 ठीक है? सिंपल चीज है कि ये सर्कल जो बना है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसा है, तो इस सेंटर से ए और सी दोनों के डिस्टेंस सेम है, तो इन पॉइंट्स पर पोटेंशियल VA और यहाँ का VC सेम होगा। सिमिलरली पॉइंट बी, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अगर हम V एज्यूम कर भी लेते हैं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, ठीक है। So here you can see that point A, C, B are at same distance from center. So potential at all these point will be same. मतलब इनमें potential difference जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। अगर पॉइंट का V मान लेते हैं तो VA माइनस V करें चाहे VC माइनस V करें, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा। मतलब VA माइनस V एट B करते हो या VA माइनस VC करेंगे तो ये पोटेंशियल VA माइनस VB, इस sorry again, I have to write VC and VB, VC VB बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो दोनों केस में वर्क डन भी सेम होगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है VQ। चाहे हम इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाले चाहे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाले सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वर्क डन सेम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। In this question, what is given? 2 point charges Q and minus 2Q are kept at distance D apart. तो पहले इसका एक डायग्राम फ्रेम करेंगे। एक एंड पर रखेंगे हम चार्ज प्लस Q, दूसरे एंड पर माइनस 2Q और इनके बीच की डिस्टेंस रखेंगे हम D। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज Q। हम लोग एक पॉइंट लेना है P रिलेटिव टू Q, तो Q से हमें डिस्टेंस मेजर करनी है। तो assume that the distance of P from Q is x. Then what is this distance? Remaining distance is D minus x. और ध्यान रखेंगे पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें कोई भी डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं करनी पड़ेगी P पर, सिंपली चार्ज के साइन लेने पड़ेंगे, ओके। यहाँ क्या पॉइंट P ऐसा एज्यूम करना है कि नेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम शुड बी 0। तो 0 कब होगा? जब पॉइंट Q के चार्ज Q के थ्रू P पर पोटेंशियल और माइनस 2Q के थ्रू P पर पोटेंशियल का सम 0 हो जाए। तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एट P ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू B, दिस शुड बी 0। द फॉर्मूला पोटेंशियल इज 1/4πε0 Q अपॉन R। तो 1/4πε0, here Q is Q and R is X plus 1/4πε0 at P due to B, charge is minus 2Q and distance is D minus X.
and the sum of these two should be 0. So if you take like term common, then you will get only 1 upon x equals 2 upon d minus x. And on solving, you will get the result x equals to d upon 3. इसका मतलब ये हुआ कि if you are placing point P at a distance d upon 3 from plus Q, at this point potential will be 0. So you will say required point is, आपको मेंशन जो करना पड़ेगा कि point P should be at a distance d upon 3 from plus Q. This is the final answer. Again, before doing this numerical, first determine which chapter is this. So it's a formula, remember, it's gonna sound आएगा. How many electron must be added to one plate and removed from other so as to store energy 25 joule in 5 nanofarad parallel plate capacitor. यहाँ capacitor की energy दी हुई है, that is U. 5 nanofarad. Nanofarad means 5 multiplied by 10 raised to minus 9. कैपेसिटर देख के तो समझ में आ ही गया है कि ये कैपेसिटर चैप्टर का है, लेकिन नंबर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो इसका मतलब है हमें चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बाय क्वांटाइजेशन चार्ज, दैट इज एन ई, क्यू इक्वल्स टू एन ई. तो ये नोन है कि हमें नंबर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं. यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. हम लोग यहाँ पर कैपेसिटेंस दिया हुआ है और एनर्जी यू दी है 25 जूल equals to 25. Now Q square can written as 25 time shift 2 see here 2 into capacitance C, or Q equals to square root of 25 multiplied by 2 multiplied by capacitance. Capacitance is 5 nanofarad. 5 multiplied by 10 raised to the power minus 9. Understood? Now, calculate the square root. 25 का square root जाएगा 5 and this is 5 to a 10. 10 into 10 minus 9 is 10 power minus 8. 10 power minus 8 का root होगा 10 power minus 4. Now, by using quantization of charge, you can calculate number of electrons and will be 5 into 10 raised to the power minus 4 divided by electronic charge, that is 1.6 into 10 power minus 19. On solving, you will get the result. It will come nearly 3.2 into 10 raised to the power 15 electrons. This is first part of this question. Second part is that how would you modify this capacitor so that it can store 50 joule energy without changing charge on the plate. तो ये कह रहे हैं कि हमें एनर्जी को डबल करना है. ये नोन है कि फॉर्मूला होता है हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी एनर्जी का, और ये चाहते हैं कि एनर्जी 25 जूल की जगह 50 जूल कर दें, जबकि हमें चार्ज को सेम रखना है. तो ऐसा तो है नहीं कि हम चार्ज सेम रखें तो कैपेसिटेंस सेम होगा, तो एक चीज तो बदलनी ही पड़ेगी. मान लो कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हैं, तो एज यू कैन सी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटेंस रिलेशन देखें तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो मीन्स अगर हम पोटेंशियल डबल कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस हाफ होना चाहिए. और ये हाफ कैसे हो सकता है? हमें पता है सी का फॉर्मूला था कैपेसिटेंस का के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी. तो इससे ये पता चलता है कैपेसिटेंस हाफ हो सकता है अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें. तो दिस इज वन ऑफ द आंसर. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द आंसर कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगी, और कैपेसिटेंस हाफ होगी तो एनर्जी डबल हो जाएगी.
तो दिस विल आंसर कि बाय doubling the distance between the plates of capacitor, we can modify this capacitor. Now come to last question of this unit. Two parts are there in this question. 12 picofarad capacitor is connected to 50-volt battery. How much electrostatic energy is stored in this capacitor? तो first make its data, क्या क्या दिया हुआ है. Capacitance C is given, that is 12 picofarad, means 12 into 10 raised to the power minus 12 farad. What other is given, that is potential difference V, 50-volt battery है, and you are asked to calculate the electrostatic potential energy. So by the formula U equals to half CV, so you can calculate it. Okay, so this is simple and you have to do its calculation by your own self. By yourself, you have to calculate this calculation. Now I am doing next one. If another capacitor of 6 picofarad is in series with it, with the same battery, तो इसमें डिफरेंस क्या है? बट डिफरेंस ये है कि अगर ये एक कैपेसिटर 12 पिकोफैरेड का है तो इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में एक 6 पिकोफैरेड कैपेसिटर और लगा दिया गया है, इंक्लूडिंग अ बैटरी सेम, दैट इज ऑफ 50 वोल्ट. कॉम्बिनेशन जितने भी क्वेश्चन है पहले इक्विवेलेंट फाइंड किया जाता है. ये 12 पिकोफैरेड का है, 6 पिकोफैरेड का है, तो पहले हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालेंगे बाई 1/12 प्लस 1/6. Do it solving. 3/12, that is 1/4, and final capacitance will be C equals to 4 microfarad. 4 microfarad will be the total capacitance of this system. V is known. Again, we can calculate. We have to calculate the charge stored. Okay, तो चार्ज फाइंड करना है तो चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे C Q equal to CV. C will be equivalent capacitance. Suppose I am taking it as C dash. 4 microfarad means 4 multiplied by sorry, this is not in microfarad, na? This is picofarad. Please put picofarad here. So 4 into 10 power minus 12 होगा, not 10 power minus 6. Multiply potential is 50. If you do multiplication, 200 multiplied by 10 to the power minus 6. Arrange the zeros, you will get 2.0 10 to the power minus 4. 100 के 2 जीरो इसको दे देंगे तो माइनस 4 आएगा, तो इतना कूलम आएगा चार्ज. एज यू नो, चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज सेम, तो जो चार्ज इस पर होगा वही चार्ज इस पर भी होगा. तो अब ये नोन है क्यू का फॉर्मूला सी भी होता है, तो हम इससे V1 निकाल सकते हैं, इससे V2 निकाल सकते हैं. तो अगर मैं निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर, तो V is equal to Q upon C. The Q is known, 2 into 10 raised to the power minus 4 divided by its own capacitance 12 into 10 power minus 12. By this you can calculate potential difference across 12. And if you have to do calculation of V2, तो हम 50 में से अगर फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये निकल आएगा. अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं, V का फॉर्मूला Q upon C लगा दें. तो बाय दिस वे यू कैन डू ऑल दिस क्वेश्चन. सिमिलरली आप इसके अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए. जो भी प्रॉब्लम हो, अगर लगता हो किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो मुझसे तुरंत ही पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. और अगर आपने शेयर ना किया, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको न्यू वीडियोस और मिल जाएं, क्योंकि आगे वीडियो कंटिन्यू रहेंगी. और जितने भी रिलेटेड इस यूनिट से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जिससे आप वहां पे सर्च कर सकें. थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो.